So good evening everyone. Am I audible to all? ସମସ୍ତଙ୍କୁ voice ଆସୁଛି? Yes, no? Good evening. ସମସ୍ତଙ୍କୁ voice ଆସୁଛି? Yes, yes. Okay, fantastic. Okay, let's guys start. So before that, ଆମର Kalinga IAS platform रे offline ର class start ହେଇଛି. Already जो माने interested they can join. तो ଆମର जो offline ର class जो start ହେଇଛି तो एटा ଆମର 15 मार्च ରୁ start ହେଇଛି तो क्लास विथ टेस्ट सीरीज हमर रहबो प्रीलिम मेन इंटरव्यू बाय टोटल रहबो 1 ईयर रो करंट अफेयर्स रहबो 1 ईयर क्लास एटा रहबो 30000 प्लस हमर ऑनलाइन सेम को स्टार्ट हेछि जोटा कि हमर 50000 रहउछि एंड जो माने प्रीलिम मॉक टेस्ट देबाकू चाहछथि दे कैन जो टेक करिया पई ए दीटा का नंबर आपण कनेक्ट करि परिबे ए जो नंबर दीटा को छै इथे कनेक्ट करि परिबे तापरे हमर जो हमर एथिक्स बैच भी हमारा स्टार्ट है जोटा कि 3000 रुपीज रोचे ऑनलाइन रे तो सेटा भी नहीं परिबे एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर मॉक इंटरव्यू हमर चली छै एंड वेलफेयर एक्सटेंशन मॉक इंटरव्यू ओके सो लेट्स कम बैक टू द हमर टॉपिक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमें आज last आड़ करी जिबा क्वेश्चन नंबर 79 okay which of the following envisages by the right against exploitation in the constitution of India तो कोउटा हमर constitution right against exploitation मेंशन अछि हम आंसर आरो वेरी गुड ओके देखो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा कितना नंबर आर्टिकल ना 23 और 24 ना 23 और 24 ओके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 और 23 होची कोन ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आडा होची 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ फोर्स लेबर ओके तो जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो जो रोचे कि फोर्स लेबर रोचंदी कि प्रोस्टिट्यूशन होचंदी तो सब गुड़ाक आम आर्टिकल 23 रे आसीबो एंड प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द माइंस होचे फैक्ट्री एंड माइंस होला 24 तो ए दीटा देखो हमरो राइट एक्सप्लॉइटेशन आसीबो ओके अनटचेबिलिटी कितना नंबर आर्टिकल अनटचेबिलिटी हमरो 17 नंबर आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज हमरो ओके तो एटा हमरो तो ये आर्टिकल आमर कौटी ना 29-30 रोचे ओके तो आंसर कौन हो 1 and 4 हो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी okay then right to property is a statutory right not a fundamental right
Article 300A is inserted in the Indian Constitution by 44 Amendment Act during the period of the Congress government. तो कौन हवा हमारा एटा ओके वेरी गुड फैंटास्टिक ओके तो एटा हमरो करेक्ट आंसर हे जिवो बी ओनली माने करेक्ट आंसर ओनली 2 हे जिवो ओके तमरो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो तुम जानिछ हमर केत नंबर आर्टिकल रे अछि ना 300 ए रे अछि ओके 300 ए रे हमरो ए राइट टू प्रॉपर्टी अच्छी तो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि हमारा फंडामेंटल राइट रे आगु थिला आर्टिकल 31 रे तो सेटा को फंडामेंटल राइट रू कटि के आनी की हमर कोन ना 300 ए रे रखा गला एटा होछ हमर कोन ना गोटे लीगल राइट नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बर्तन एटा गोटे लीगल राइट ओके 300 ए रखा गला ना हमर ओके 44 अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे कहा समय रे ना एटा मन रखिबा हमर जनता गवर्नमेंट समय रे आसीतला कहा समय रे जनता गवर्नमेंट एठी जो हमर एग्जैक्टली हमर सब ठीक अछि एथि रे 44 अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट हो ड्यूरिंग हमर काउटा ना जनता गवर्नमेंट टाइम रे हमर आसीतला तो इट इज दिस राइट होच हमर कोन ना गोटे स्टैट्यूटरी राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट ठीक अछि रिलेटेड टू हमर 300 ए ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम ना तुम ओनली 2 हे हमर करेक्ट आंसर ओके तो ए हे हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन नॉट टू एलियन अंक भितरु कोटा इंडियन सिटीजन को ओनली अवेलेबल अछि नॉट फॉरेनर मानको देखो इंडियन सिटीजन मान को अच्छी इंडियन फॉरेनर मान को नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना नंबर आर्टिकल एटा हमरा ना 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा हमरा बोथ को अवेलेबल अच्छी ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि आर्टिकल 14 तो एटा हमरा कोन ना बोथ हमरा इंडियन और फॉरेनर मान को अच्छी ओके माइनॉरिटीज राइट ऑफ द माइनॉरिटीज एटा हमरा कोन ना तमरा जो रहुची बोथ हमर इंडियन आउ फॉरेनर मान को रहउची सॉरी बोथ हमर इंडियन फॉरेनर मान को हमर कोडा रहउची ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो एटा हमर रहउची एटा केवल हमर इंडियन मान को इंडियन इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा बोथ रहउची पर्सनल लिबर्टी हमर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी बोथ तो हमर कोन हिजबो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट ऑफ माइनॉरिटीज तो ए दीटा का हमर केवल इंडियन सिटीजन मान को रहउची नॉट हमर फॉरेनर मान को तो करेक्ट आंसर कौन है हमर ताले 1 and 3 हिजबो करेक्ट आंसर वेरी गुड तो जो माने आंसर दे छथि 1 and 3 से माने करो हमर करेक्ट आंसर ओके द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एटा कोडी मेंशन अछि कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हमर 82 कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ओके कांसेप्ट ऑफ हाँ तो आमर सेटा कही ना कोटा केवल इंडियन सिटीजन मान को नॉट एलियन पचारि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल इंडियन सिटीजन को नॉट एलियन मान तो 1 टा हम आमर 3 टा हम राइट ऑफ माइनॉरिटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी दीटा हमर ओके
तो यहाँ आमर कौन हम ना तुम मन रख कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट यहाँ आमर कौटी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ओके डीपीएसपी रे अच्छी केत नंबर पार्ट रे अच्छी ना पार्ट 4 रे अच्छी आमर आर्टिकल 36 रु 51 ओके तो यहाँ आमर आयरलैंड रु कॉन्स्टिट्यूशन एटा में कॉपी करिछि ओके तो यहाँ आमर मन रख सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट तो यहाँ आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अच्छी ओके तो यहाँ को आमर जो बी.आर. आंबेडकर कहते जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू आमर जो ब्रिटिश टू द आमर गवर्नर मान को जो दौले ओके तो सेटा आमर कौन होता ना गवर्नर मान को जो दौले तो सेटा आमर पर आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जोटा कि आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आमर मेंशन अच्छी डीपीएसपी रे पार्ट 4 आमर आर्टिकल 36 रु 51 ओके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आमर आसु तो आंसर है जीव कोन आमर ना ए हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश कोन पई आमर very good fundamental for the governance of the country এটা কোন হবে the purpose of inclusion of हमरो directive principle of state policy कौन पाए political democracy गांधीयन democracy social economic democracy ओके तो एटा हमरा कोन ना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करिया पे हमरा कह जाउची हमरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा हमरा कोन करूची ना सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अच्छा फंडामेंटल राइट टा हमरा कोन करूची फंडामेंटल राइट हमरा मन रखियो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी okay next question which of the following article of the directive principle of state policy deals with in promotion of international peace and security आ भितरु international peace and security को आर्टिकल हमर प्रमोट करूची international peace and security तो हमारा कौन ना आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 इज टॉक्स अबाउट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमारा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रोचे ओके तो आंसर हम 51 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोडा ऐड करा जायतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोडा ऐड करा जायतिला क्वेश्चन नंबर 85 तो यहाँ मन रखिबो जे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री तो आंसर बी हिजबो तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एटा हमरो कोन हबो ना बी हिजबो करेक्ट आंसर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ओके तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कोन हेतिला तो मु जस्ट तुमको कहि दोजे टिके ओके तो एतिक मन रखियो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमर आसीतला केबे आसीतला ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमर 1976 रे आसीतला सेते चारिटा नुवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ऐड कराइतला गोटे फास्ट हमर कोन ना टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर्टिकल 13 प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर आर्टिकल 39A
तापरे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A तापरे हमरो टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटा हमरो 48 तो एई चारिटा जका हमरो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसीतला ओके तो जदि हमर क्वेश्चन देखिबो कोन हमर पडितला जे आ भितर कोटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराइतला तो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ओके नेक्स्ट consider the following statement related to directive principle of state policy. It is spell out the socio-economic democracy in the country provided the provision contained in this principle are not enforceable by the court. कौन होगा correct answer है 86 question number 86 ओके तो देखो आम कहले यहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करुच्ची सेकेंड है जे आमर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ा रहा दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ओके तो जमती आमर फंडामेंटल राइटा इफ यू आर द फंडामेंटल राइट वायोलेशन तमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परछ अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को जाई परछ अंडर आर्टिकल 226 रे किंतु दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ओके तो कौन हो आंसर ना बोथ हो बोथ आमर 1 and 2 करेक्ट अच्छी तो आंसर हो बोथ सी हो करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पज ऑफ द इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ ता भीतर कोडे से कहूँ डीपीएसपी रे हमर मेंशन अछि देख तुम ये जो ट्राफिकिंग आउ ह्यूमन बीइंग आउ फोर्स लेबर एटा हमर आर्टिकल 23 कोडा हमर कोडे अछि ना फंडामेंटल राइट रे एटा अछि ओके सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्राफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स तो एटा हमर फंडामेंटल राइट रे अछि नॉट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो सेथि भाई हमर फर्स्ट स्टेटमेंट ता ठीक नहीं ओके सेकंड तो एटा हमर जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक माने मद पीबनी अदर ड्रग्स जोडा इंजूरियस टू हेल्थ यू शुड नॉट टेक तो एटा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो गांधीयन प्रिंसिपल अछि ओके हमर तीनटा हमें कहिबा तीनटा एक कोन ना गोटेला लिबरल इंटेलेक्चुअल आ गोटे हमर होची कोन ना गांधीयन प्रिंसिपल ओके जो गुडा गांधी जो नीति रे जो जोडा हेतला जेमति कि ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्टिकल 40 तो जेमति कि हमर तमे देखिबो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री तो एटा 43 रे अछि ओके तापर हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 43 बी रे अछि 46 रे एससी एसटी मानकर डेवलपमेंट पई सोशियो इकोनॉमिक प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ एबे बफरिंग भी होची कौन हवा आंसर आरो एबे भी बफरिंग होची ट्राई टू डू द आंसर तो देखो गांधीयन प्रिंसिपल हमरो दीटा रहउची गोटे ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आमे जोटा कहले कोन ना आर्टिकल 40 और रूरल एरिया रे हमरो जो रहउची 43 बी जो कॉटेज इंडस्ट्री हम जो पढ़िले 43 एटा 43 बी नु 43 तो ये जोड़ा हम एबे पढुतिले जे प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री 43 और ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत 40 तो ये दीटा देखो स्टिल इट इज बफरिंग ना ठीक था अस्तु भाबे ओके ठीक अछि तो हमरा आंसर कोन हबो
ना आंसर 2 and 3 हे जिवो ओके सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ए दीटा को आर्टिकल हमरो कोन ना गांधीयन प्रिंसिपल अछि ओके गांधी को प्रिंसिपल ए दीटा को अछि ओके तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमर प्रियम्बल ऐड करा जायतिला आ भितरु को गुडा का हमर ऐड करा जायतिला आमे कहतिले 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तीनटा एसएसआई गोटेला हमरा सोशलिस्ट आ गोटेला सेकुलर आ गोटेला इंटीग्रिटी तीनटा हमरा ऐड करा जायतिला ओके गांधीयन प्रिंसिपल एसएसआई गोटेला सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी तो आंसर कोन हे जिवो ना डी हे जिवो हमरा करेक्ट आंसर ओके तो आंसर कौन हम ना डी है करेक्ट आंसर 1 2 3 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट कॉन्टेस्ट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 हमारा 2 3 4 है करेक्ट आंसर डी है द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन समस्त को नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन जदि तुम एज नाही प्रॉपर है नहीं कि तुम जदि क्रिमिनल एक्टिविटीज रे हमरो इन्वॉल्व अछ तो सेथिरा मन नुहे फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री ओके राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये तीनटा का आंसर कोन हबो ना डी है 2 3 4 सो तमे नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ए कोटा फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपन बाय सिख states right to make laws for social reform देखो राइट टू कन्वर्सन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट टू कन्वर्सन इज प्रैक्टिस करि परिबो प्रोफेस करि परिबो किंतु जण को फोर्सफुली कन्वर्ट करि परिबन तो चारि जोथिरे अछि तमे काटि दियो तो आंसर कौन है ना 1 2 3 है हमरो करेक्ट आंसर ओके तो करेक्ट आंसर कौन है ना 1 2 3 है हमरो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट इन इंडिया ओके correct related to fundamental right in India so they are guaranteed against the state action they are enumerated in part 3 of the Indian Constitution okay they ensure social and economic and political justice they are unlike the Bill of Rights in USA तो देखो एटा रॉन्ग अछि देखो 3 टा एंश्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस तो हमारा आंसर कौन हम ना 1 and 2 हो तो यहाँ आम पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करुच्ची ओके आमर डीपीएसपी टा इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ओके तो आमर फंडामेंटल राइट आ पॉलिटिकल जस्टिस एंड डीपीएसपी टा हमर इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस करूची तो तीन टा तमे जोथरे अछि काटी दियो तो आंसर तमरे कोन बाहर जीवो
ना 1 and 2 हिजबो हमर करेक्ट आंसर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके protection in respect to conviction of offense, protection of life and personal liberty, protection of minorities, equal pay for equal work for both men and women. कौन है जीवो ना एटा हमरा हिजबो तमरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एटा हमरा जो हमें कहले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आसीची तो एटा हमरा फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल नंबर 21 तो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जेटा हमरा फंडामेंटल राइट रो अछि एटा भी कन्विक्शन इन द ऑफेंस हमरा होची कोन ना तमरा ना एटा भी फंडामेंटल राइट रो अछि ओके तो जोटा कि आर्टिकल 20 रे अछि सो एटा 20 21 ओके एटा हम 29 20 जो 30 रे तो ये जो हमरा कहले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो एटा हमरा कोन होची ना तमरो 39 रे 39 रो डी रे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एटा हमरा 39 सब प्लस डी रे अछि ओके तो एटा हमरा कोथि आसुची ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल रे आसुची ओके आउ कौन सोशलिस्टिक रे आसुची ना प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर 39 ए रे आसुची ओके तो पार्टिसिपेशन ऑफ द हमर जोडा में कहिले जे पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43 ए जोडा कि हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओके 1976 रे आसीतला ओके तो एडा में डिस्कशन भी करितले तो आंसर हमर एडा कोन हिजबो ओके तो करेक्ट आंसर हिजबो जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जोटा कि 39 डी रे अछि तो एटा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आसुची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो एटा हमर कोडा ना पार्ट 4 रे अछि देखो इक्वल पे फॉर हमें इक्वल वर्क हमर एटा भी अछि 39 डी रे अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हमर जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ओके स्मॉल फैमिली नॉर्म एजुकेशन थ्रू मदर टंग आर द प्राइमरी ओके तो आ भितरे कोडा हमर पार्ट 4 रे अछि देखो हमर तीनटा तो नाही एटा काटी दे परिबो ओके एजुकेशन थ्रू मदर टंग आर द प्राइमरी लेवल ओके तो हमर कोन ना सेकंड हम ना फोर्थ हम एटा में नुहे ओके तो हमारा आंसर है कोन ना बी है जो 1 and 2 ओके तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो 39 डी आ जोडा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एटा हमारा आर्टिकल 44 ए दीटा जाक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि ओके the main advantage of the parliamentary form of the government is that main advantage of parliamentary form of government कौन हमरा तो मन रखिबो the main advantage of parliamentary form of government जे जोथिरे एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर जो पर्यंत जो एग्जीक्यूटिव अछंती एग्जीक्यूटिव दे आर हमर कोन होची ना गिविंग they have the majority in the Lok Sabha ओके तो एटा होची हमरा कोन तो 95 कोन हिजबो तो सी हिजबो हमरा करेक्ट आंसर ओके 95 सी हिजबो आई थिंक समस्त आंसर ठीक अछि प्रभासी विजयानंद लक्ष्मी प्रिया रोजालिन सागरिका डेस्टिनी पूजा झरणा जागृति शुभ्रांशु सस्मिता ओके फैंटास्टिक समस्त आंसर ठीक अछि
वेलफेयर स्टेट एम्स हमारा वेलफेयर स्टेट टा कौन करूची वेलफेयर स्टेट एम्स वेलफेयर स्टेट माने कौन ना मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम नंबर तो जत्ती के हमारा मैक्सिमम वेलफेयर करियो मैक्सिमम नंबर पाई तो सेटा हमारा हमारा तो करेक्ट आंसर कौन हम ए हिजबो वेलफेयर माने समस्तंकर जेमती वेलफेयर करिवा तो मैक्सिमम वेलफेयर टू द मैक्सिमम नंबर तो आंसर कौन हिजबो ना ए हिजबो हमारा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज तो जुडिशियल रिव्यू हमें पढ़ी आर्टिकल हमर 13 रो जदि तुम फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट रे किछि आसुची धर स्टेट किछि लॉ नै के आसुची कि गवर्नमेंट किछि लॉ नै के आसुची तुम फंडामेंटल राइट एगेंस्ट रे सो हमारा सुप्रीम कोर्ट तार जुडिशियल रिव्यू पावर यूज करी कि सेटा को नल एंड भॉइड करि परिबो इफ इट इज अगेंस्ट हमर फंडामेंटल राइट सेटा को नल एंड भॉइड करि परिबो तो जुडिशियल रिव्यू ता हमरा कोन एक्चुअली A हिजबा हमरा the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the law and executive order जहाँ भी law और order executive order आसी that is within the constitution ର boundary भितर कि नहीं सेटा चेक करा जिवो if it is हमरा against the constitutionality and against the हमरा माने संविधान रो बाहर एटा को कोन करा हबो null and void तो एटा होछ हमरा आर्टिकल 13 रे तो जोडा को हमें कोन कहूची जुडिशियल रिव्यू तो आंसर कोन हिजबो ए हिजबो हमरा करेक्ट आंसर ओके तो हमारा वर्ल्ड रो सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू रामानुज जोड़ा इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट हैदराबाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टीचिंग ऑफ रामानुज कौन हबो ए होजी बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन इज टू डिवोशन तो ए हिजबा हमरा करेक्ट आंसर फैंटास्टिक समस्त आंसर ठीक अछि ओके नेक्स्ट with reference to United Nations General Assembly consider the following statement the UN General Assembly can grant observer status to the non-member state intergovernmental organization can seek the observer status to UN General Assembly permanent observer in UN General Assembly can maintain mission at the UN headquarters okay next question 99 तो तीन टा स्टेटमेंट ठीक अछि माने रखिबो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो एथिरे सो जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू ए नॉन मेंबर ऑफ द स्टेट तो जे भी हमरो ए यूएन जनरल असेंबली मेंबर हो ताको ऑब्जर्वर स्टेटस रे हमरो रखि परिबो ओके सेकंड हला हमर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली एटा भी हमर ठीक अछि ओके तापरे परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन इन द यूएन हेडक्वार्टर तीनटा को ठीक अछि तो आंसर हे जबो कोन ना हमर डी कहीं के कहउछन समझते तीनटा को ठीक ना 4 नंबर होची एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिसाइल कंट्रोल रिजिम संघाई कोऑपरेशन तो इंडिया काहर मेंबर एटा भी हमरा आंसर हबो डी ऑल देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी आर मेंबर हमरा एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम रो मेंबर एशिया रो भी मेंबर G20 रो भी मेंबर ओके तमे ब्रिक्स रो भी मेंबर इंडिया ओके
ब्रिक्स रो भी मेंबर तापरे तमे कोन ना क्वाड रो भी मेंबर I2U2 ए सबुर इंडिया होची मेंबर इवन इफ हमर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बोली हमें कहूचे ओके न्यू डेवलपमेंट बैंक रो भी मेंबर तो हमर कोन हबो ना सबु तक इंडिया होची आर मेंबर ओके तो आंसर कोन हबो ना ऑल हिजबा करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्लास रे हमें जो बाकी गुडा अच्छी तो हमें पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ओके तो जो जोडा मु करिनी से गुडा कम कोन करबी मु 70